हेलो पिला माने जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते बहुत भले थे। सो डेरी न करिकी चलतु आज क्लास टी स्टार्ट करवा। सो आज क्लास फर्स्ट क्वेश्चन हूँ बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। मन रखु यहाँ गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट यूनिट गोटे यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन कौन आमर ना एक्सप्लेन द लॉज ऑफ लर्निंग फॉर्मुलेटेड बाय थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे 15 मार्क भी आसीपे नले माने आपनकर शॉर्ट नोट आकार रे 5 मार्क भी आसीपे आप डेफिनेटली देखिकिना जिबे। सो चलतु आम या विषय किसी जानिबा। दिस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक। तो ये थ्योरीटा थॉर्नडाइक देथिले। अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग इज ए मैटर ऑफ बॉन्ड कनेक्शन। तो से कहिथिले ए थ्योरीटा को कोन कहिथिले गोटे बॉन्ड कनेक्शन द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेचुरल कनेक्शन बिटवीन सिचुएशन एंड रेस्पॉन्स। These bond connection are formed through trial and error। तो सी कही कि ये बॉन्ड कनेक्शनटा केमिति सृष्टि हुए ना ट्रायल करिया द्वारा बारंबार चेष्टा करिकी विफल होला परे मध्य आमे न हारिकी आहुरी चेष्टा करिया दरकार। This means that we learn by making trials and making error or mistake during the trial and making further this trial, eliminating the wrong response. Thus learning takes place by the process of trial and error. For example, a cyclist learns cycling after good amount of trial and error for maintaining balance. Thorndike studied the characters of trial and error, learning in a number of experiments on cats। तो सी कौन करथिले ना ए एक्सपेरिमेंटा कहा ऊपर करथिले कैट्स ऊपर करथिले। तो ओवरऑल लर्निंग माने जो लर्निंग थ्योरी जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी रहिला ता माने कोन सपोज आमे बाइक ड्राइविंग शिखुछु तो फास्ट शिखला बेले कोन आमे डायरेक्टली तार एक्सीलेटर मोड़ी दबा कि ना सेमित तो नुआ ना प्रथमे आमे धीरे धीरे मोड़ीबा तापर सपोज हमर किछि थरो आमे गोटे कोन किछि गोटे प्रॉब्लम हैला देन ताको फर्दर ट्राई करबा सेई जो भूलटा हमर होइला सेटा को आमे फर्दर न करिया पई चेष्टा करिया। तो एटा ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी। द बेसिक प्रिंसिपल आर तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी रे कौन कौन बेसिक प्रिंसिपल थिला ना बॉन्ड कनेक्शन ऑल लर्निंग इज ए मैटर ऑफ बॉन्ड कनेक्शन। तार मेन फोकस कोथरे थाए ना स्ट्रेंथनिंग ऑफ कनेक्शन बिटवीन सिचुएशन एंड रेस्पॉन्स। Then asila stimulus as motive. The stimulus may be in the form of a motive, need or desire to attain goal. This implies the individuals for action. Thorndike law of learning। Thorndike कौन law देथिले the most acceptance and fundamental law of learning are law of exercise। मन रखंतु law of exercise, law of effect, law of readiness। ये तीनटा law देथिले। law of exercise कौन कहूची ना this law implies that learning takes place by exercising। से कहथिले कि आमे गोटे जिंस को बारंबार करिया द्वारा एक्सरसाइज करिया द्वारा कौन हुए ना से जिनसटा पूरी शार्प हो जाए। by doing or activity participate in the performance। it is also called law of use। आपको आउ कौन कहि परिबा ना law of use मध्य कहि परिबा and law of disuse। law of use कौन when a modifiable connection is made between situation and response that connection strength is increased। in the other words practice makes perfect। आम समस्त जाने कि जदि आम गोटे जिनस को प्रैक्टिस करुचे बारंबार यूज करुचे से लॉटा को देन आम कौन करवा माने से आहरी आमर स्ट्रेंथ को इनक्रीज कर परिबा। देन आसला लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ डिसयूज कौन when a modifiable connection is not made between situation and response over a length of time that connection strength is decreased। this law implies the negative value of lack of perfect। the education implication of the law of exercise is great। this emphasizes the value of repetition, drill and practice of memorizing and master in something। then asila law of effect। second law ta kon ame janiba this law implies that if our effort are accompanied by a feeling of achievement or satisfaction we are further inspired to learn and therefore effective learning take place। तो कौन है ना कहले कि आमे जदि ट्रूली इफर्ट दबा देन आमे ऑटोमेटिकली कौन इंस्पायर हवा पई पढ़िया माने पढ़िबारे इंस्पायर हवा ता सहित कौन करबा ना सेटा गोटे इफेक्टिव लर्निंग गोटे हमकु करिया पई हेल्प करबो।
if our efforts are not accompanied by a feeling or of satisfaction, आमे जदि आम निज पढ़ारे satisfied नथिबा then आम effort किछि matter करिवनी, not much or real learning takes place, those the learner feeling or emotional state effect learning, सेइथ पई कोंती गोटे मनीषर इमोशन और फीलिंग मध्ये बहुत मैटर करे पढ़िबा पाई. In the other words, success and failure condition the learner to a great extent. Law of readiness. Law of readiness कौन ना, this law emphasizes the importance of readiness to learn. गोटे पिला पढ़िया पई केते आग्रह करूची, तार रीडिंग पावर केते. This implies that the learner must be mentally prepared to learn. जमती mentally prepared थी कि मो पढ़ी. This emphasizes the importance of motivation in learning. तो एटा कहाँ पर डिपेंड करे, मोटिवेशन से केते मोटिवेट हेची. देन आमे जानिबा तार एजुकेशनल इम्प्लिकेशन कौन ना, एरो चाइल्ड readiness to learn. The law calls upon the teacher to motivate the child. टीचर कौन करती, मोटिवेट करती before he undertakes any teaching work. The curricular activities should be according to the child mental level of maturity. तो सब बड़े करिकुलम टा पिला मानको इंटरेस्ट आउ ताको मैच्योरिटी लेवल को नेकी करिया दरकार. से जेति कि जिंस कंज्यूम करि परिबो सेही अनुसार ही हमें करिकुलम बनेवा दरकार. दिस विल एंश्योर readiness as well as arouse curiosity for new things to be learned. तो एतिक थिला हमर क्वेश्चन नंबर 1. देन जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 2 को. नंबर 2 है एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. तो क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी किए देथिले एटा आपन को म आगुर भी कहि सारिची. क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी हमर पावलोव देथिले. सो क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी वाज डेवलप्ड बाय इवन पावलोव इन 1909. ही वाज रूसियन साइकोलॉजिस्ट एवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन द ईयर ऑफ 1904. तांको 1904 मसरे नोबेल प्राइज मध्ये मिलिथिला. दिस थियोरी एक्सप्लेन हाउ एन ऑर्गेनिज्म बिहेवियर बिकम्स पेयर्ड विथ सम स्टिमुली इन द एनवायरनमेंट. दिस थियोरी वाज ऑल्सो नोन एज, ए थियोरी को आउ कौन कह जाए ना, पावलोवियन कंडीशनिंग थियोरी कह जाए परिबो. लर्निंग बाय कंडीशनिंग थियोरी कह जाए. कंडीशनल रेस्पॉन्स थियोरी मध्ये कह जाए. सिंपली कंडीशनिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन एसोसिएशन बिटवीन ए स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स इज लर्न. तो ए कंडीशनिंग थियोरी माध्यम रे आमे गोटे पर्टिकुलर स्टिमुली आउ रेस्पॉन्स मध्ये रे एसोसिएशन टा करि पारु आउ तांको रिलेशनशिप टा मध्ये जानि पारु. तो यहाँ को लेकिन से गोटे कुकुर उपर एक्सपेरिमेंट करते, जो एक्सपेरिमेंट से कौन करते मुझे आपको ओवरऑल कहीदे. तो से गोटे कुकुर को कौन खाद्य देखले जहाँफल कि कौन है कुकुर पार्टी लाड़ झरला. तापर से कौन कले ना गोटे कुकुरटा को खाद्य देवा पूर्वर बारंबार कौन कले घंटी बजेले. तो जितेबाला घंटी बजेले कुकुरटी कौन घंटी शब्द आ खाद्य मध्य संपर्कटा बुझी पारा. तापर पावलोव कौन कले ना खाद्य देवा पूर्व घंटी बजेले बाकी खाद्य देले ना. तो से तापर लक्ष्य कले जे कुकुरटा पार्टी ऑटोमेटिकली लाड़ झरला. तो सेटा से बेलटा गोटे स्टिमुलस हिसाब से नहीं आउ जो लाड़टा झरला सेटा हूँ तार रेस्पॉन्स. तो ओवरऑल से कौन देते ना गोटे स्टिमुलस आउ रेस्पॉन्स रो एसोसिएशन टाकू आमको दर्शाई. This experiment is conducted by Ivan Pavlov. A dog was kept hungry for a few days and it was tied to experimental table. जोटा कि कहली गोटे कुकुर को बहुत भकिला कुकुर को कौन खाद्य देखते जहाँफल कि पार्टी कौन लाड़ झरीला. द बेल was ringing before the dog got food. After getting food the dog was salivated. It was measured up to some trials and the dog did not get food but the bell has been ringing. तथापि कौन है खाद्य दिगलानी किंतु घंटीटा स्टिल बाजुला. द डॉग स्टिल सालिवेटिंग विदाउट फूड. कुकुरटा को खाद्य दिया ही नथला सत किंतु से तथापि कौन लाड़ झराउला. सो द डॉग वाज कंडीशन. से कौन है डॉगटा कंडीशनड है बाय द कंडीशन स्टिमुली जोटा कि होची बेल. तो यहाँ को लेकिन मेजर कॉन्सेप्ट कौन थिला ना बिफोर कंडीशनिंग कौन फूड आउ तापर आफ्टर कौन होता सालिवेशन होता. देन सेकेंड से कौन करते बेल बजेले किंतु सालिवेट हेलानी. आफ्टर कंडीशनिंग कौन है तो ये मेजर कॉन्सेप्ट दीटा थिला. फास्ट तो से बिफोर कंडीशनिंग कौन होता लक्ष्य करुले, तापर आफ्टर कंडीशनिंग कौन होता लक्ष्य करुले. देन आसला प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. तो प्रिंसिपल कौन अच्छी क्लासिकल कंडीशनिंग रो फर्स्ट तो रेनफोर्समेंट. व्हेन द कंडीशन स्टिमुलस बेल वाज प्रेजेंटेड with natural stimulus माने फूड सहित जो बेल दिगला द formed is said to be reinforced as it was able to elicit natural response. Then आसला extinction. Extinction कौन when the food repeatedly did not follow the bell
द डॉग स्टॉप सालिवेशन दिस डिसअपियरेंस ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन जदि धीरे धीरे आम कौन करा बेल बजाइबा कि कुकुरटा को खाया दबा ना ताले धीरे धीरे कौन हम से लाड़ फर्स्ट फर्स्ट झरेब तापर ऑटोमेटिकली बंद हो तो यहाँ हूँ एक्सटिंक्शन देन आसला स्पॉन्टेनियस रिकवरी थ्रो देयर इज एक्सटिंक्शन ऑफ कंडीशन रेस्पॉन्स इट रीअपियर्स स्पॉन्टेनियसली बट एट ए रिड्यूस इंटेंसिटी टू कंडीशन स्टिमुलस तो सही कथा ही कहला धीरे धीरे कौन हो रिड्यूस हो से लाड़ झरेबा धीरे 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 बंद करके पूरा सेटा बंद हो देन आसला स्टिमुलस जनरलाइजेशन स्टिमुलस जनरलाइजेशन कौन देयर इज ऑल्सो ए चांस टू रेस्पॉन्ड इन ए सिमिलर मैनर टू several stimuli that means we can be conditioned to respond to a number of stimuli and this is called stimulus generalization then asila stimulus discrimination कौन when each individual react differently based on past experience to different situation it is said to be stimulus discrimination so विभिन्न प्रकार प्राणी विभिन्न प्रकार रेस्पॉन्स करी थांती responding to a green light but not to a yellow light एटा गोटे तार एग्जांपल देन आसला हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कौन once the conditioning was formed it acts as a stimulus for elicited another condition response देन आम जाना तार एजुकेशनल इम्प्लिकेशन कौन अच्छी ना इट हेल्प्स टू एवॉइड मेनी ऑफ आवर अनवांटेड फियर आमर भयटा को माने कौन करिया को रिड्यूस करिया हेल्प करे इट हेल्प्स टू कंट्रोल द एबनॉर्मल बिहेवियर लाइक डिफरेंट हॉबीज एनिमल ट्रेनर्स यूज क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल तो एनिमल ट्रेनर्स माने कौन करती एमती सपोज गोटे माने धर से गोटे कुकुर को ट्रेन करिया चाहती देन ताको कहबे कि तू एटा करदेबू तोते खायाटा दियाजिबो ताको लोभ देखिए काम हासिल करती दिस प्रिंसिपल आर यूज इन साइकोथेरापी तो साइकोथेरापी रे भी मध्य ए सब प्रिंसिपल यूज करा जाए देन आसला आमर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किए देथिले आमे जानिचे स्किनर देथिले एटा भी गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मने रखंतु एटा भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट रो 5 मार्क रो शॉर्ट नोट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय B.F. स्किनर he is referred to as the father of operant conditioning ताकू ऑपरेंट कंडीशनिंग रो फादर बोली कहा जाए इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आपको आउ कौन कह जाए ना इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोली मध्य कह जाए अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर लर्निंग अकर बाय ऑपरेंट बिहेवियर इट इज द रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच रिजल्ट फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ स्टिमुली सो ही डेवलप सिंपल एपरेटस नॉन एज स्किनर बॉक्स से गोटे बॉक्स बनई जहाँ स्किनर बॉक्स कह जाए स्किनर कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विथ ए रेट तो ये मन रखु किए कौन नहीं करथिला जेमती पावलोव नहीं कुकुर को सेमिति ये क्या ऊपर एक्सपेरिमेंट करथिले स्किनर रेट को लेकिन एक्सपेरिमेंट करथिले आ मन रखु से गोटे बॉक्स नहीं जहाँ स्किनर बॉक्स बोली कह जाए ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ए टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस through which the strength of a behavior is modified by reinforcement or punishment तो सी कौन करथिले ना जदि गोटे गोटे कथा होची कि जदि माने सी भलो परफॉर्मेंस करथिला देन ताकू माने रिवार्ड दउथिले आ जदि खराब करथिला देन ताकू पनिशमेंट दउथिले तो तांकर कॉन्सेप्ट कौन थिला ना ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ए मेथड ऑफ लर्निंग दैट ऑकर्स थ्रू रिवार्ड और पनिशमेंट जोटा कि कहली जदि भलो परफॉर्मेंस कला रिवार्ड आ जदि खराब परफॉर्मेंस कला देन ताकू पनिशमेंट दियाउथिला स्किनर इंट्रोड्यूस द टर्म्स रेनफोर्समेंट पुनिशमेंट तांकर दुटा टर्म्स थिला गोटे हूँ रेनफोर्समेंट आ गोटे हूँ पुनिशमेंट देन आम जाना एजुकेशनल इम्प्लिकेशन कौन थिला स्किनर डेवलप्ड ए सिस्टम ऑफ लर्निंग कॉल्ड प्रोग्राम्ड लर्निंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बहुत ही इंपोर्टेंट एटा बहुत थर एंट्रांस एग्जाम रे आसे कि प्रोग्राम्ड लर्निंग थ्योरी किए देथिले मन रखंतु स्किनर देथिले बिहेवियर और रेस्पॉन्स इज डिपेंड अपॉन इट्स कॉन्सिक्वेंस से कहते कि बिहेवियर आउ रेस्पॉन्सटा क्या ऊपर डिपेंड करे ना तार कॉन्सिक्वेंस ऊपर डिपेंड करे द डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द लर्नर इज टू बी इमीडिएटली रेनफोर्स पॉजिटिवली टू स्ट्रेंथेन दैट behavior can be shaped through serially reinforcement and right types of stimuli individualized instruction is recommended teaching machines are developed based on the principle of operant conditioning आउ कौन ना कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जोटा कि आम CI बोली कौचे इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग तो मन रखु आपण माने तार थ्योरी लिखा सहित ये जो एजुकेशनल इम्प्लिकेशन से पकई राइट अबाउट ए थ्योरी तापर तार एजुकेशनल इम्प्लिकेशन लिखा कही तो आपण डेफिनेटली यहाँ लिखिकिना आसबे।